Good morning all and welcome back to weekly analysis by Mayuur Sampat. Well, wonderful festival season going on. Har Ghar Tiranga and India Shining story coming in. So what has the weekly analysis of the stock market telling us, and how do we go about looking at the market? What is the view? How to go about things? Acha, Monday is a holiday. So tomorrow also we will have one more day of learning which will be there. So let's start. Let me share the screen. Okay, everybody able to see the screen, right? Great. Chal. So first thing first, what we normally do as far as the weekly analysis is concerned, we look in terms of the Nifty and the Bank Nifty. Okay, so today also we are going to have a look at the Nifty and the Bank Nifty and what the working of the Bank Nifty and the Nifty. Chalo, let me open the chart. Let me clear the chart of all the thing which is not required. Okay, and then एक कुछ नया भी सीखेंगे. चलो, so let's do this particular thing. Please video off कर लेना, everyone. Great. चलो, तो निफ्टी को पहले देख लेते हैं. निफ्टी को पहले देख लेते हैं. And what has the Nifty done? So in terms of weekly, this thing, we will go to first the weekly chart. Always we start the analysis with the weekly chart. So what has weekly chart telling us, and how do you go about this? So when we are looking at the weekly, okay, one side up move every now and then, and we had a clear this thing. Last week का हम लोग ने जब भी weekly analysis किया था कि this is one of the resistance. ये 17,400 के ऊपर जाएगा तो things wants to go up, and वही see this price went up, took the support of the last week itself, and then again one more week on the upside. Generally हम लोग क्या करते हैं, the resistance and support के point of view से we draw the two lines weekly के point of view से. ठीक है, the top of the week which is 17,500 around. Okay, and the low of the week. So previous week ka high and low we want to mark. Simple rule should be very simple. So 17,200 and 17,500 was previous this thing, and in this case the new high is 17,753, means 17,750 levels. So this is the first time after a strong up move it is going to face the supply zone. Clear? But strong FII is buying, this, that, everything which is going on. So one of the resistance over here, what we see is the 1830 wala resistance. Now why we call this as a resistance? Because it is coming inside the zone for the first time. Okay, that doesn't mean कि वो immediate selling होगा, but the resistance जब भी first time आता है तो it normally works. So this is what the thing is as far as the resistance is concerned. And what are the other levels, important levels we want to mark out is this 18,170 wala levels. Okay, so if you see this over here 173, 170 round figure ke point of view se. So what we normally do is, okay, we draw this figure and change the color to blue color for us to remember that this is a weekly wala line. ठीक है, so when we go to a daily line हमको ये advantage मिलता है.
सो ऑन द लोअर साइड अगेन उसका सपोर्ट क्या बनने वाला है, जो उसका रेजिस्टेंस था वही अभी उसका सपोर्ट बनेगा when it wants to come down. So the immediate resistance now is 17,500 levels. So if this यहाँ पे वीक में कंसोलिडेशन होने का चांसेस ज्यादा हो सकता है, एक तो कल का छुट्टी है, सो फिर नंबर ऑफ डेज ऑफ ट्रेडिंग रिमेन्स, ओपनिंग में भी गैप ओपन भी होता है, ओके तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 18,230 वाला लेवल, ओके सो दिस इज एज फार एज वीकली इज कंसर्न, सो स्ट्रॉन्ग अप मूव चल रहा है, ओके व्हाट यू कैन आल्सो डू इज सिंपल ड्रॉ अ फ्री लाइन फ्रॉम द बॉटम, भाई क्या चल रहा है, ओके सो ट्रेंड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर वो ऊपर 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 ही जा रहा है तो नॉट नेसेसरी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ सेलिंग. यस इंट्राडे में बहुत सारा वॉलिटिलिटी हो सकता है and we may look at it in a different fashion. Okay, so here it is. Let's look at it in a different format. Okay, so even while the price had gone up, नीचे से फिर से ऊपर आया, so in this particular fashion, यहाँ पे देखिए, this is a very strong up move. Okay, when the price actually broke the 1504 levels, trying to go down वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट नॉट एबल टू गो डाउन एंड देन अगेन अ गैप अप. सो ड्यूरिंग अ स्ट्रॉन्ग मूव ये गैप अप मारने वाला कार्यक्रम बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है. ओके एंड लुक एट दिस इन अ ऑब्जेक्टिव मैनर. सो इफ आई ड्रॉ अ लेवल्स ओवर हियर 17,750 वाला लेवल्स एंड ऑन द बॉटम साइड ओके 17,620 वाला levels. Okay, so this is as far as the daily charts are concerned. ठीक है, so here you can see every weekly वाला thing, okay, giving a support, again trying to go up, again trying to go up, again trying to go up. अभी जो level है ये वाला, okay, so technically if it remains on the higher side or it is just going to go sideways, ज्यादा करके साइडवेज ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाएगा, नंबर ऑफ डेज आर लेस, ओके तो साइडवेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. लुकिंग एट 240 मिनट्स का रेंज, ओके तो यहाँ पे क्लियर है कि इन 240 मिनट्स चार्ट द साइडवेज इज देयर. द लाइंस, नया लाइंस बनाने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज क्लियर है कि ये साइड में चला गया है. बट यहाँ पे एक ही चीज आपको बोलना चाहता हूं कि लुक एट दिस ऑब्जेक्टिवली. अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के रख सकते हैं, ओके सो ट्रेंड लाइन बना के रखा, अगेन अ 240 मिनट्स वाला थिंग गोइंग साइडवेज और अपसाइड मूव, वी विल कम टू नो व्हेन द मार्केट ओपन्स अप. बट यू कैन सी 3-4 दिन 240 मिनट्स में जस्ट साइडवेज वाला थिंग हैपनिंग, ओके एंड लुकिंग एट इट ऑन अ 60 मिनट चार्ट. सो 60 मिनट चार्ट में अगेन अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग साइडवेज है. तो फिर सिंस इट वाज अ लॉन्ग वीकेंड, ओके तो थीटा डीके होता है तो पीपल कीप ऑन सेलिंग द थिंग एंड काम करता है बिकॉज ऑफ टाइम डीके जो बोलते हैं हम लोग. सो इन दिस केस इफ आई एम टू लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली, सो विच इज द पॉइंट वेयर प्राइस इज नॉट रेडी टू गो डाउन, ओके so looking at this and the signals over here, तो पहले तो ये वाला कैंडल को मैं टच कर लेता हूं. so that is 17,676. ये लेवल काफी टाइम आपने देखा होगा, ओके काफी टाइम ये लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं किया and then one strong move down, okay and then the next candle was on the upside move. तो ये बुल मार्केट में एवरी डिप में बाइंग करने का हिसाब किताब होता है. So this is what it shows. Now looking at 60 minute chart, okay what is this 3 candles formation telling you? Think about it. Okay lower low बना है, okay strong red color का candle है. That means now I want my price to go above this. That means 17,750 के बाद में अच्छा खासा once again a move can start. अभी
is it going to go sideways and then drop coming in? So again, you have a resistance over here or a support over here in this particular fashion at 17,600 levels. Okay, so बहुत फास्ट नीचे नहीं जाता है because of a strong buying which is coming in और FIIs continuously buying कर रहे हैं. Okay, छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं एक बार के लिए, मे बी 10 मिनट्स चार्ट में देख लेते हैं. ओके, तो 10 मिनट्स चार्ट में what we are looking at in terms of a 10 minutes chart, look at it, what it is done. Again, we are looking at बड़े टाइम फ्रेम में the sideways वाला thing, but if you see this on a छोटे टाइम फ्रेम में 10 minutes में the buying coming in. Okay, again the buying coming in, buying there. Okay, technically broken over here, but it has taken this support of 17,776 levels. So in the smaller time frame, अगर सुबह को साइड में चला जाता है या तो नीचे आता है, तो इसके नीचे मुझे कैंडल चाहिए for the price to go down. Simple rule is that. Okay, while it is doing sideways, practically कुछ नहीं हो सकता है, because in on a smaller time frame एक simple rule है, अगर ये गैप मार के ऊपर खुल जाता है, अगर ये गैप मार के ऊपर खुल जाता है, that means again the move is there. Your technically your stop loss now will be, if you are in a buy, okay, your stop loss should be below this. Simple. Okay, so on a smaller time frames also lot of activity is happening as far as the Nifty is concerned. So I hope ये Nifty के analysis के point of view से it is much more clearer. Okay, so we go to the Bank Nifty then. Bank Nifty being really strong, छोटे time frame में आप देख सकते हैं. But let's go to the weekly first. Again, last week में it was clear कि अगर ये weekly तोड़ता है, the price wants to go. So along with the Nifty, okay, FII is buying strongly, and then price going up. Okay, so weekly mein, this again the weekly level was also broken, which we had this particular thing in place. Now look at it objectively. So ye 39,260 levels, which is very, very close. Correct. So once again, the next level over here is almost the 39,900 wala levels. So will it directly go up? Now problem ये होता है, okay, if it goes up very fast, there is nothing we can do about it, right? If it stops and then go up, तो chance मिलता है. Agreeing with this, right? So in this case, हम लोग का फिर से color change कर लेते हैं. So if the weekly में अगर strong रहता ही है, तो we want to go and buy once again. लेकिन नीचे में okay 38,750 का levels देखना है on the lower side, and then weekly जो previous week का जो understanding था 38,097 के बाद में a clear buy. Okay, so 38,097 से okay it went up to 39,115, almost a gap of 1,000 points. So clear है कि अगर आपका weekly levels तोड़ता है, okay, अगर आपका weekly levels तोड़ता है, तो आपको buy करना है rather than sell. So here we are seeing कि ये एक resistance था, इसको तोड़ा, again trying to come down and then going up. Always it is going to happen कि जैसे वो levels को तोड़ता है तो ऊपर चले जाता है. So this is as far as the Bank Nifty is concerned. Daily chart में आते हैं, okay, and we have our thing in place. See the way the trend has continued. Okay, यहाँ पे लग रहा था कि things will be changing, but every dip is a buy. And सबसे important चीज which I keep on telling every HDFC Bank को देखिए, okay, and PSU other banks except for SBI. Okay, SBI का maybe the numbers were not good and then gap down and then it continued down. But अगर वापस SBI को भी खींचेगा, and this week the hero of this particular week was the ICICI Bank, okay, making new highs. So we will check that particular chart also.
So in this particular case, okay, every dip again a buy, every dip again a buy coming in, every dip, okay, over here again a buy coming in. Okay, आप देखिए कि मुश्किल से 2 दिन का भी ये नहीं आ रहा है. So strong up move, but now over here we have our resistance in place. So we will look at it on a smaller time frame कि वो smaller time frame में क्या कर रहा है 240 minutes के point of view. So 240 minutes में we have our levels in place 38,760 levels. So 240 minutes में यहाँ पे अगर जब तक सेलिंग का प्रेशर नहीं आता है तब तक जबरदस्ती से सेलिंग नहीं करना है. लेकिन अगर अर्ली मॉर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके आई विल हैव दिस थिंग इन प्लेस. ओके, सो 39,096 गैप ओपन खुल जाता है, कुछ नहीं कर सकते. ओके, सपोज इट कम्स डाउन बैक टू 38,996 वाला लेवल, तो यहां से वापस बाउंस बैक करने का चक्कर रहता है. वन इंपॉर्टेंट की थिंग जनरली आप लोग नोटिस करते होंगे. ओके, रैली करता है, बेस करता है, रैली करता है, बेस करता है, रैली करता है, बेस करता है. सो एवरी जो भी लाइंस बनती है दैट विल बी योर सपोर्ट लेवल और योर एग्जिट इफ यू आर इन अ लॉन्ग बाय. ठीक है, तो लाइंस को रिस्पेक्ट करते रहता है. सो इफ इट इज अ रैली बेस रैली बेस रैली बेस रैली, तो वो ऐसे ही चलते रहेगा. सो 240 मिनट्स अगर सिंपल सादा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो. ओके, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखो एंड यू कैन सी, मैं ये वाला पॉइंट नहीं ले रहा हूं. ठीक है, ये वाला भी ले लेते हैं. और एक अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं. ओके, नाउ लुक एट दिस. इसका टेक्निकली एंगल कैसे चेंज करता है देख लीजिए. बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर. स्लो जाता है अलग बात है, लास्ट में बहुत सारा ये होता है. सो वी हैव अवर लेवल्स इन प्लेस. प्लीज राइट डाउन इफ यू वांट टू राइट डाउन. ओके, लेट्स गो टू द 60 मिनट चार्ट. सो हियर वी आर सीइंग स्ट्रॉन्ग अप मूव. 1 2 3 कैंडल स्ट्रॉन्ग अप मूव, नॉट एबल टू सस्टेन आफ्टर द 3 वाइट सोल्जर का एक सिस्टम है और एक अंडरस्टैंडिंग है 3 वाइट सोल्जर कमिंग इन एंड दिस इज द थिंग. ओके, लास्ट में even while the price was going down it just pulled up. So very important कि ये भी फ्राइडे को साइड में चला गया. So levels बहुत ही क्लियर है. Okay, now it needs to technically break a level to go and sell something. जब भी FII का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रहा है ऑन अ डेली बेसिस, ओके, जबरदस्ती से सेल करते हैं अगर सिस्टम है तो. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, सिस्टम है तो सेल कर सकते हैं, नहीं तो एवरी डिप इज अ बाय, तो फिर बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्यों नहीं सोच सकते. ओके, सो लेट्स मूव टू अ 10 मिनट्स चार्ट. ओके, 10 मिनट्स चार्ट में यार the point was price went down, not able to go below this, right? और ये 38,750 वाला levels जो था. Okay, now look at this, such a wonderful inside candle coming in and then price running away. Okay, so एक ही particular चीज रहती है. Okay, when the buying is happening we have to look in terms of buying. हम लोग ने clear बोला था, we had put in the video of bullish engulfing also. So we were in sell intraday में सुबह को, but again a bullish engulfing coming, not able to go down on the time frame के point of view से, and then when it broke the 10 minutes thing, okay, the price wanted to go up. Now same चीज यहाँ पे देख लीजिए. Okay, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट अगेन 60 एंड 38 के पॉइंट ऑफ व्यू से 38.9. ओके, अगेन टेकिंग अ सपोर्ट. सो एवरी नाउ एंड देन वो सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाता है. नाउ द लेवल्स आर वेरी क्लियर. ओके, ओपनिंग क्या होता है
ओपनिंग क्या होता है. So opening के point of view से the system will be in place. So you have seen this कि every time so big gap happening and the price keeps on moving up. Now what is pulling the Nifty up? Some of the stocks immediate देख लेना है तो HDFC को देख लेते हैं. Okay, so HDFC में daily time frame में देखते हैं. Okay, now HDFC लास्ट 2 दिन से क्या कर रहा है, गोइंग साइडवेज. सो इसको हम लोग वॉच में रखेंगे. ओके, ड्रॉ द 2 लाइंस. डेली चार्ट ही लेता हूं इसका जस्ट. ओके, सो अगर ये पॉज लेके फिर से ऊपर चलता है तो 1491 के ऊपर हमारा फिर से बाय आ सकता है. ओके, एनीथिंग बिलो 1475 सो करेक्शन मोड में चले जाएगा. बट वी हैव टू वॉच दिस 2 लेवल ऑफ 1491 एंड 1475. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्लू के बैंक निफ्टी क्या करने वाला है. ओके, लेट्स लुक एट एसबीआई. सो एसबीआई नीचे जाने के बाद में फिर से अप मूव ले लिया. सो आफ्टर अच्छा खासा करेक्शन, स्ट्रॉन्ग अप मूव. अभी यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है. सो 1527 वाला लेवल्स को ध्यान रखना है. सी ओवर हियर डेली चार्ट में इट टुक द सपोर्ट ओवर हियर एट दिस जंक्शन, टुक दिस सपोर्ट. यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ये 1 2 3 बना के फिर से ऊपर भागे. ओके, नाउ प्रैक्टिकली हम लोग जनरली हम लोग सोचते हैं कि भाई ये फर्स्ट अप मूव में हम लोग बाई नहीं करते हैं. बट जस्ट कीप अ वॉच. अगर ये वापस नेगेटिव होता है तो द बैंक निफ्टी विल बी अफेक्टेड. ओके, सो लेट्स चेक द कोटक बैंक अगेन. कोटक बैंक not going anywhere in the up run. Okay, Kotak Bank not going anywhere in the up run. यहाँ पे Kotak Bank को what is this 2 candles telling you? Anyone can tell me what is this 2 candles telling you? Bearish engulfing, right? So just watch for this level of 1851. Okay, bearish engulfing अगर इनवैलिड हो जाता है, अगर इफ इट गोज अप, बट यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग दिया है. ओके, बहुत सारा सेल नहीं होता है बिकॉज स्ट्रॉन्ग बाइंग फिर से नीचे से बाइंग हो ही जाता है. सो 1821 तक का इसका एक लेवल हो सकता है इफ इट स्टार्ट्स टू गो डाउन. तो कोटक बैंक नॉट रनिंग अवे एनी प्लेस. Okay, very important levels for us. Okay, let's check the Bank of Baroda. Strong up move अभी भी दिख रहा है. Okay, but a doji candle. So last का low and last का high एक बार के लिए मार्किंग करके रख लीजिए. Okay, एक्सिस बैंक को देख लेते हैं एक बार and then we last go to the ICICI Bank. Okay, so एक्सिस बैंक में अच्छा खासा मूव था, क्लियर था. 38 के बाद में वापस एक बार के लिए बाइंग आ जाएगा. Okay, and it has followed the technicals very nicely. Okay, and the last but the least जो ये वीक का हीरो था was the ICICI Bank. See the way ICICI Bank has just gone up straight. Okay, थोड़ा अटकता है फिर से ऊपर गया, थोड़ा अटकता है फिर से ऊपर गया. And people thought कि oh my god doji candle आया है. Yes, doji is a indecision, but फिर भी डोजी के नीचे नहीं गया and then the price went up strong. So strong rally as far as ICICI is concerned, which has also kept the Bank Nifty up. So this was the Bank Nifty and the weekly analysis. What is more important is how do you basically trade the Bank Nifty? Is you need to have a clear understanding of the components of the Bank Nifty. और सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 स्टॉक है, 12 stocks, which practically gives you a clear idea what is the things which are happening. Okay, and if you can just have a clear understanding of what will bring down the Bank Nifty or what is pushing the Bank Nifty up, okay, that is the best way to go about. So I hope this analysis was good enough. Any particular questions? We have a few minutes wherein we can take up the questions.
Okay, two things in this Sir, particular case. Yeah, please go ahead. in Bank Nifty, after crossing 39096, हाँ जी. 150 rule will be automatically set in, or there also we'll have to keep a watch, it may reverse. Yes. So 150 वाला rule will be there in place, of course. क्योंकि देखिए generally 150 वाला rule कैसे काम करते हैं? If the opening is somewhere around 150 200 levels, okay, उसको यहाँ पे थोड़ी time spend करना पड़ता है before it goes by another 300 400 500 points. बराबर है? So if gap up के बाद थोड़ा सा sideways होगा, then Right. only. So definitely the rule will still come into picture. Good question. Wonderful. Okay, sir. Thank you. Anything else? Any other questions? See, get your doubts clear. Okay, it will help you when you are trading live in the market. That is the best thing to go about. Okay, if it is a 10 minutes rule, 45 minutes rule, yeah, 150 wala rule, the rules still remain the same all the time. Okay, only thing is okay, when it is in the downside, we are looking for a down wala thing. If it is upside, we are looking for a up wala. Okay, but the point is अगर बहुत ज्यादा बाइंग हो रहा है तो जबरदस्ती क्या सेल भी नहीं करना है. But the rule still remains the same. The rules never change. Okay, the point is, see, trader में और investor में क्या फर्क है? What is the difference? दोनों जन पैसा कमाने के लिए मार्केट में आते हैं. Yes or no? But the point over here is, when you are coming over here to make money, okay, think in terms of what is your investment. Again and again repeating the same thing, but it becomes very, very important. Trading and investment में the point is, you feel bad about it. Oh my God, ये भाग गया, वो भाग गया, ये भाग गया. बराबर. लेकिन portfolio के point of view से you may feel good about it. But have you bought sufficient enough? What is the earning you are looking for at the end of the year? Year के हिसाब से. Okay, 12%, 15%, 30%, 20% क्या है? Okay, now people are doing quite well by 15% मिला, बहुत अच्छा है. Not a bad thing. But trading में क्या होता है? Trading में क्या होता है? The jump can be anything. Why? Because you are using the leverage, intraday leverage use कर सकते हैं और it can give you a better return. तो उसके लिए मेहनत भी तो अलग है. The important thing over here to understand is, हम लोग यहाँ पे leverage जब भी हम लोग वापरते हैं, okay, leverage में क्या होता है? The losses are there, but the profits also been there. यहाँ पे the only thing which you need to control is your risk and risk management. अगर आपका risk और risk management सही रहेगा, okay, just think about it. आपका daily earning, simple daily earning की बात कर रहा हूं, ₹1000, that's it. इससे ज्यादा भी नहीं जाता हूं. With all the expense being paid, all the expense, okay, ₹1000 का daily earning, multiply it by 20, right? So this is 2000, correct है? 20,000, okay, and then multiply it by 12. Now you tell me, is this not a good income? Yes, sir. अभी आप परसेंटेज देख लीजिए, परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन इश्यू क्या होता है मालूम है?
यहाँ पे द माइंड इज नॉट एट पीस इवन व्हेन वी आर अर्निंग 1000 रुपीज। अरे भाई बड़ा पिक्चर देखो ना, पूरा साल में आप क्या करते हो वो देखिए ना, और इसको मल्टीप्लाई करने का बाद में जब भी मौका मिलेगा, व्हेन यू नो योर सिस्टम्स यू आर प्रैक्टिसिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, अभी तो सिर्फ एक लॉट से काम करते हो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन 1000 रुपया कमाने में मुश्किल से 3 से 5 मिनट लगता है, फिर दुकान नहीं बंद करने के लिए सोच रहे। सो दैट इज वेयर द थिंग्स स्टार्ट्स टू मेक अ डिफरेंस। मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, एवरीवन हु इज देयर, न्यू ओल्ड दिस दैट, अभी सपोज यू आर प्लेइंग विथ 1.5 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज, ओके, जस्ट एक साल, 1 ईयर, just don't lose your capital. Just don't lose your capital. To become a trader, just don't lose your capital. And you cannot trade more than 3, max 4. Very, very important. मैक्सिमम 3 से 4 ट्रेड आप दिन का ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। एंड जस्ट पुश योरसेल्फ कि मुझे आई एम प्रॉफिट्स इमटेरियल, यहां पे प्रॉफिट्स यू कैन सी दिस प्रॉफिट्स, यस और नो, you can see this profits which are there for you. You can see this profit, it is there for you. Okay, but important thing is आपका कैपिटल को बचाना है और कुछ नहीं करना है। You want to become a strong and a powerful trader, a professional trader, आपको आपका कैपिटल को बचा के रखिए। एंड यहाँ पे एक डिसिप्लिन लाना है कि आपको 3 से 4 ट्रेड से ऊपर नहीं लेना है। डू वॉट एवर यू वांट टू। मेरा एक रूल है कि इफ आई एम रॉन्ग इन 6 ट्रेड्स बैक टू बैक, I don't trade for 2 days. That is a rule. I can analyze the market, क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं, but this is what is it. Okay, this is what it is. ये माइंड को चेंज करना जरूरी है। एंड द अमाउंट ये यू कैन बीट योर व्हाटएवर, जो भी बेंचमार्क पब्लिक दिखाता है आपको, जो भी बेंचमार्क पब्लिक दिखाता है, ओके, जो भी बेंचमार्क पब्लिक दिखाता है, एंड ये स्टॉक डबल हो गया, ये किया वो किया, बट आपका पोर्टफोलियो का जो ग्रोथ है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। वहां पे क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं लगता है एंड यू फील गुड अबाउट इट, बट एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर यू स्टैंड, मे बी 15-20% का, 30% का, 40%, बट यहां पे simple rule is that if you only and only do your trading activity, now ये first year का understanding है, okay, next year में 1.5 times को बढ़ाइए, next year में 2 times से बढ़ाइए, next year में 3 times, in 5 years where you can go, इतना पैसा आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं दे सकता। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे हार्डवर्क होता है, यहाँ पे माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है, यहाँ पे सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। एंड ऑल दैट व्हाट इज देयर, ओके, ऑल दैट व्हाट इज देयर, वो जब तक आपको करना ही नहीं है तो फिर डोंट कम इनटू द गेम ऑफ द ट्रेडिंग। ओके, don't come into the game of trading, because unless and until you are going to work hard over here, things are not going to be in place. So thank you very much for joining me on this weekly analysis. I hope you are going to take away this small mantra. Okay, you need to just look at this only 2 things. If you become profitable for the day, okay, I always say दुकान बंद कर दो, because you can convert your laptop to an ATM machine. ATM machine, don't work on
कि मुझे इतना ही पैसा मिला, बस आफ्टर एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितना परसेंटेज गेन हो सकता है. ओके, सो work on yourself rather than thinking about where the market is going, this that. If you push yourself to go to the next level बहुत बड़ा हो सकता है. And one more announcement which I want to do. Okay, जो हम लोग का 3 महीने का प्रोग्राम है, okay, I am pushing it to 6 months. Yes, 6 months live with me. जो भी प्रोग्राम में है, okay, ये एक फेस्टिवल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड. ओके, इंस्टेड ऑफ 3 months आप 6 महीना साथ में बैठिए, ओके, एंड मेक योरसेल्फ अ प्रो ट्रेडर. दिस इज मयूर संपत साइनिंग ऑफ. बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक with a weekly analysis of Nifty and Bank Nifty. Just remember, it is your dreams. Bye bye. Take care. Love you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.